वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। चलें, आज कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स का लिए थे, अब हमारे प्रोटीन पार्ट रह गया था। तो व्हाट इज प्रोटीन, हमने यहाँ से बात शुरू करनी है। प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स हैं ये हाईली, एक सेकेंड, ठीक है। प्रोटीन्स हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, यानी ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है, मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड, ठीक है। और किस चीज से मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। प्रोटीन कंसिस्ट होते हैं कार्बन पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। दे आर द पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स हैं। अमाइनो एसिड आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। तमाम अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ पेप्टाइड लिंकेज के जरिए। नाउ व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज, हमने ये पहले क्लियर करना है। तो पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड ओ एन एच का बॉन्ड, यानी कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड, लेकिन ऐसा कार्बन जिसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ हो और ऐसी नाइट्रोजन जिसके साथ एक हाइड्रोजन मौजूद हो। प्रोटीन हैज मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स के पास 10,000 से ज्यादा अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। तमाम प्रोटीन्स यील्ड करती हैं अमाइनो एसिड अपॉन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के ऊपर जितने भी अमाइनो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स ब्रेक करती हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब है प्रोटीन प्लस वाटर। ऑन द ब्रेकिंग ऑफ द प्रोटीन क्या यील्ड हमारे पास आती है? स्मॉल अमाइनो एसिड। कितने अमाइनो एसिड आ सकते हैं? जाहिर है जितने अमाइनो एसिड से मिल के हमारी प्रोटीन की वो एक चेन बनी है, उतने अमाइनो एसिड टूट के हमारे पास आ जाएंगे। प्रोटीन आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती हैं। दे बिल्ड अप द बल्क ऑफ द नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल बॉडी। जानवरों की जो बॉडी है उसके अंदर जो नॉन बोनी स्ट्रक्चर होता है, जो बोन से मिलके बना नहीं होता, लेकिन बिल्कुल नरम पार्ट भी नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा थिक पार्ट होता है, वो तमाम एनिमल्स का किस चीज से मिलके बना होता है? प्रोटीन से। दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ एनिमल। ये जो प्रोटीन है ये मेजर कंपोनेंट है तमाम सेल्स और टिश्यूज के। जो जितने भी एनिमल है उनके टिश्यूज और सेल्स का मेजर जो पार्ट है दैट इज प्रोटीन। तकरीबन 50% जो ड्राई वेट है सेल का वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। दे आर फाउंड इन द मसल्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे मसल में, स्किन में, हेयर में, नेल्स में, वूल में और फेदर के अंदर। ये वो सारी चीजें हैं जहाँ पे प्रोटीन मौजूद होते हैं। Amino acid. Amino acids are the organic compound consisting of both amino and carboxyl group. Amino acid वो organic compound हैं जो consist करते हैं amino group के ऊपर, ठीक है, और carboxyl group के अंदर। carboxyl group क्या हो गया? C double bond O। ये amino group क्या हो गया? NH2। they have general formula RCH NH2COOH, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप हमारे पास हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, ये NH2 हो गया हमारे पास अमाइनो ग्रुप, ठीक है। और ये हमारे पास पूरा मॉलिक्यूल है किसका? एक अमाइनो एसिड का। ये जो R चेन है इसके साथ और लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स जुड़ सकते हैं या कोई भी कार्बन चेन आ सकती है इसकी जगह पे, जिसको हम कहेंगे कि ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। साइड चेन आर डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है। हर अमाइनो एसिड दूसरे से वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ द साइड चेन। ये COH का ग्रुप और NH2 का ग्रुप विद कार्बन सेम रहेगा। टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं। 10 जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से जो 10 है आउट ऑफ द 20 अमाइनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। ये हमारी ह्यूमन बॉडी से आसानी से सिंथेसाइज करवाई जा सकती है। दीज अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। ये एसेंशियल नहीं है, ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। while the other 10 which cannot be synthesized by our body or called essential amino acid। और बाकी जो 10 हैं जो कि नहीं सिंथेसाइज हो सकते हमारी बॉडी से, उनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड रिक्वायर होते हैं हमारी बॉडी से, मस्ट बी सप्लाइड थ्रू द डाइट। वो अमाइनो एसिड जो एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उन्हें हमें डाइट से लेना जरूरी है क्योंकि वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करेगी। अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। द टू अमाइनो एसिड लिंक थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। दो अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। पेप्टाइड लिंकेज वो बॉन्ड है जो बनता है बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जो कि पानी के निकलने की वजह से बनता है, बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड।
अमाइनो ग्रुप एक अमाइनो एसिड का यानी NH2 प्लस कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप दूसरे का। जब एक अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप की बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड लिंकेज बनता है, जैसे कि ये है। दिस इज एक अमाइनो एसिड, इसके पास COH ग्रुप है, R चेन है, CH है और NH2 है। ये दूसरा है। अब इसका ये वाला NH2 पार्ट और इसका ये कार्बोक्सो वाला पार्ट आपस में बॉन्डिंग करेगा, पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा। पानी का मॉलिक्यूल कैसे? ये एक हाइड्रोजन और यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा CH C डबल बॉन्ड और NH वाला, दैट इज पेप्टाइड लिंकेज। ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज बन जाता है। एक तो हम कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, दूसरे हम कहते हैं कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द शॉर्ट एंड फॉर द लॉन्ग एज वेल। कि पेप्टाइड लिंकेज ड्रॉ कर दें तो दो अमाइनो एसिड हैं, एक का हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एक का OH ग्रुप रिमूव हो रहा है। और क्योंकि हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है और इनके बीच में बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज बन रहा है। अब सोर्सेज और यूजेस क्या हैं प्रोटीन के? जब थाउजेंड ऑफ अमाइनो एसिड पोलीमराइज होते हैं वो प्रोटीन बना देते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड पोलीमराइज का मतलब होता है लॉन्ग चेन बनाना। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड लॉन्ग चेन बना देते हैं तो प्रोटीन बन जाती है। प्रोटीन मेकअप करती है हमारे तकरीबन 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ एनिमल। जो प्रोटीन है वो तकरीबन हमारा 50% ड्राई वेट एनिमल का ड्राई वेट जो है वो 50% प्रोटीन होता है। हर प्रोटीन का एक सोर्स होता है और कैरी करती है स्पेसिफिक फंक्शन। Sources and uses of proteins are sources of animal proteins are meat, mutton, chicken, fish, egg. जो sources है animal protein के वो है meat, mutton, chicken, fish और egg. These are used as food by human being as they are essential for the formation of protoplasm. ये तमाम चीजें मटन, चिकन, फिश, एग और मीट इस्तेमाल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसलिए हम इसको इनका इनटेक जो है वो रेगुलरली करते हैं। एंजाइम्स आर द प्रोटीन दैट आर प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल। एंजाइम वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं लिविंग सेल से। दे कैटेलाइज अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं टेकिंग प्लेस इन अ बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं तमाम केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करने में एंजाइम्स मदद देता है। ये हाईली स्पेसिफिक हैं और इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी होती है। मैनी एंजाइम्स आर यूज्ड एज ड्रग्स, बहुत सारे एंजाइम्स ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। दे कंट्रोल द दे कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड द ट्रीट ब्लड कैंसर। ये क्या? ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं और ब्लड कैंसर को फाइट करने में हेल्प करते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी रखते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स एज अ मेडिसिन भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, आगे वी हैव अदर यूजेस सच एज हाइड्स आर द प्रोटीन। ये जो जानवरों के खाले होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं। ये इस्तेमाल होते हैं लेदर बनाने के लिए, टैनिंग के जरिए लेदर इस्तेमाल होता है टू मेक द शूज, जैकेट, स्पोर्ट्स आइटम्स। ठीक है, जो लेदर है वो इस्तेमाल होता है बनाने के लिए जूते, जैकेट, स्पोर्ट आइटम्स और इस तरह की चीजें। प्रोटीन आर फाउंड इन बोन्स। प्रोटीन्स हमारी हड्डियों में पाई जाती है। जब बोन्स हीट की जाती हैं ये हमें जेलेटिन देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हेन एंड हाउ जेलेटिन फॉर्म। तो प्रोटीन बोन्स के अंदर मौजूद होती है और जब बोन्स को हीट किया जाता है वो क्या देते हैं हमें? जेलेटिन देते हैं। जेलेटिन यूज होता है टू मेक द बेकरी आइटम। जेलेटिन किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? बेकरी आइटम को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्लांट ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन। प्लांट जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि पल्स हो गया, बीन्स हो गया। दे आर यूज एज फूड, ये खाने के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं। ये जितने भी प्लांट हैं ये प्रोटीन तो सिंथेसाइज करते हैं। जैसे हमारे पास बीन्स हैं या पल्सेस हैं तो इन्हें हम एज अ फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमारा मेजर लेक्चर था। ये कुछ सवाल हैं दैट आर रिलेटेड टू द प्रोटीन, दैट विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन द प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, साथ अमीनो ग्रुप होता है। हाउ आर अमाइनो एसिड बॉन्डेड विद ईच अदर, किस तरह से दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं? पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं। गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला देने को कहा है, यानी RCH, COOH और साथ NH2 का ग्रुप। What do you mean by the non-essential amino acid? Essential amino acid जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं लेकिन हम खुद ना बना सकें। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं लेकिन हमारी बॉडी वो बना ले। ठीक है, ये कुछ
What do all of these things have in common? They are all made of protein. In this video, we're going to discuss the structure and uses of protein molecules. Proteins are long chain molecules made of strings of amino acids joined together. All amino acids are compounds with a similar basic structure. They have an amino group, a carboxyl group, and a side chain, or R group, that is specific to each amino acid. There are 20 different amino acids. All of the different proteins are made from these 20 amino acids. The variation in proteins is caused by the order of amino acids, the chain length, and by folding the chain in distinct ways. As part of a balanced diet, roughly, how much of it do you think should be protein? About 14%. Sources of protein in our diets include meat, fish, eggs, cheese, beans, and nuts. But did you know that proteins are large molecules, too large for our bodies to absorb? That's why enzymes in our digestive system break down proteins into amino acids, which are small enough to pass from our digestive system into our blood to be assimilated by the body. When we absorb these amino acids, they are then built back up into proteins and used in a variety of ways. To test food for protein, you need to use copper sulfate solution and sodium hydroxide solution. These two liquids together may be called Biuret solution, which is a pale blue liquid. To begin the first experiment, first make a solution of the food sample by dissolving it in some water. You may need to grind it up first with a pestle and mortar. Next, add a few drops of sodium hydroxide solution to your food solution. Then a few drops of copper sulfate solution. If the solution turns lilac or purple, the food contains protein. If the food solution remains blue, no protein is present. But how does our body build proteins from amino acids? Our DNA acts as a set of instructions for how to build proteins. Each individual's DNA is made of slightly different genes, which explains some of the differences between people. For example, hair color and eye color. A change in the DNA, called a mutation, can lead to a protein with a different structure being produced. This can lead to albinism, for example. To learn more about mutations, you can watch this video. So what are proteins used for in the body? The answer is, they are used in thousands of ways. Our hair, nails, skin, and muscles are all examples of structures made of protein. Many hormones, including insulin, are made of protein. Antibodies, made by white blood cells to protect us from diseases, are also made of protein. Enzymes, biological catalysts found inside our body, are made of proteins too. You can learn more about enzymes in this video. And last but not least, proteins are also used to move some substances across cell membranes in active transport. For example, to absorb glucose in the small intestine. So now you can see just how important proteins are. चलिए ये उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर थी. एक मेन इम्पोर्टेंट वीडियो है दैट इज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है कि किस तरह से पेप्टाइड लिंकेज बनता है बिटवीन द टू अमाइनो एसिड. Let's talk about the peptide bond. Now, proteins are formed from the folding of polypeptide chains. And polypeptide chains are formed by linking amino acids together. And these links are called peptide bonds. So before we can work our way up to the fully formed and functional protein, we have to start at the very beginning by forming a peptide bond between the first two amino acids. So let's review the structure of an amino acid really quickly. Here we have our backbone. We have our amino group, our carboxylic acid group.
Here's our alpha carbon, and then the R represents our side chain. Now, peptide bonds are formed by the nucleophilic addition-elimination reaction between the carboxyl group of one amino acid and the amino group of another amino acid. So let me show you what that looks like here. Let's have another amino acid drawn right here. So the electron pair on the amino group of the second amino acid comes over to form a bond with the carbonyl carbon of the first amino acid. You give off a water molecule in the process, and then you get your newly formed dipeptide. And here is our newly formed peptide bond. Now remember that a peptide bond is just an amide bond that is formed between two amino acids. And you should also make note of the fact that this bond is a rigid and planar bond that is stabilized by resonance delocalization of this nitrogen's electrons to this carbonyl oxygen. So we can draw that out here. Remember that there is a lone pair of electrons on this nitrogen that can move here, and then these electrons will move to this oxygen atom, which also has its own two lone pairs of electrons. And so it can also be represented like this. And we'll have the formation of a double bond here, and then an extra lone pair on the oxygen atom. So as you can see, the peptide bond with this resonance delocalization of electrons has a lot of double bond character. And because of this double bond-like character, the peptide bond is a very rigid and planar one. But don't confuse this with thinking that an entire polypeptide chain would be a rigid-like structure, because even though there isn't much rotation about the peptide bond, you do still have free rotation about these alpha carbon atoms here. So now here we can see we have a dipeptide, and if we kept adding amino acids along in a chain here, we would have a polypeptide. So now if we take a closer look at the backbone of this chain, we can see that there is a pattern formed by the atoms that form this backbone. And here you have a nitrogen atom, the alpha carbon, and a carbonyl carbon. And then it repeats with a nitrogen atom, the alpha carbon, and a carbonyl carbon. And you get a pattern that looks like this. And each time you add a new amino acid, the pattern just repeats. So that whatever length of your polypeptide chain, you always start out with a nitrogen atom and you always end with the carbonyl carbon. And so this end of the backbone of the polypeptide chain is called the amino or N-terminal. And then this end of the polypeptide chain is called the C-terminal. And then once within a polypeptide chain, each amino acid is called a residue. So that's the formation of a peptide bond and a polypeptide chain. So now how do we go about breaking this peptide bond to get two amino acids again? Let's give ourselves just a little bit more room here to work. And we'll redraw a bond between two amino acids as a peptide bond here. And remember that here is our peptide bond, just to highlight it for you. And we can break this peptide bond in a process called hydrolysis. So if we have hydrolysis of this peptide bond, then we go back to forming two free amino acids. The hydrolysis of a peptide bond is helped along by two common means, and those two means are with the help of strong acids or with proteolytic enzymes. So when we use strong acids, we call this acid hydrolysis. And acid hydrolysis, when combined with heat, is a non-specific way of cleaving peptide bonds. So say you have a long polypeptide chain, and then you throw this polypeptide into a pot with some strong acid, and then turn up the stove to add a little heat. Then you would just end up with a jumbled up mix of amino acids as each of the peptide bonds gets cleaved. So the other way of cleaving a peptide bond is with proteolysis. And proteolysis is a specific cleavage of the peptide bond with the help of a special protein, an enzyme called a protease. So unlike acid hydrolysis, proteolytic cleavage is a specific process, and you can choose which peptide bonds you cleave because proteases are pretty picky about where they will cut. And many of them
जी बेटे, ये हमारे पास एक्सटेंसिव वीडियो थी ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एज वेल एज ऑन द ब्रेकेज ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नेक्स्ट 1 मिनट, इफ नॉट देन यू कैन आस्क मी द फर्स्ट 5 मिनट्स और नेक्स्ट लेक्चर। कोई भी सवाल है तो बेटे पूछ लें, रिलेटेड टू पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, रिलेटेड टू यूजेस, सोर्सेज, एनीथिंग।